Good morning, students. As we have started chapter number 4 of business studies, planning. In the previous slide, in the previous lecture, I taught you the meaning and features of planning. So today I will discuss some of the limitations of planning. As we know that planning is the primary function of management, and this is done by top management only. So it suffers from some of limitations also. So let us discuss these limitations one by one. So the first is it leads to rigidity, as the planning function. Planning means deciding in advance what is to be done. We have to decide in advance. So it's very difficult for the management, for the top management, to make it flexible or to change it whenever the situation demands. So it is a rigid function of management. We cannot change it as per the situations. So this is one of the limitation of planning, that it leads to rigidity. Second, it cannot work in a dynamic environment. If we are having a business which is quite changes, which is being followed by some of changes, or in which changes are frequent or on frequent basis, so in that case planning cannot work. Planning may not work efficiently, effectively in that environment. It cannot be very easy to change the plans according to the situations, as we uh, read in the above point, that it is very rigid. So it cannot work when the environment changes. Planning may not work. Sometimes it may not work whenever the environment changes, as the environment changes frequently. Technological changes are there, political changes are there, legal changes are there. As in the present scenario, like coronavirus is going on, the country has banned the import of any sort of material from China. So in this case, the industries who are producing goods, or who are manufacturing goods with the help of raw material from China, so it imposes a great problem for those industries. So it cannot work in a dynamic environment. May not work in a dynamic environment. We cannot plan for the future if the environment changes or keep on changing in the business. So again, it poses a great problem for the industries who are working in a dynamic environment. So third is it reduces creativity, as planning function is done by the top management only. So it means it restricts the creativity part only to the top management, because middle management and lower management are not the part of planning function. They are not supposed to uh, be the part of this planning function. So it reduces the creativity. Then planning involves huge cost. It requires lots of amount, it's a very costly process. Planning is a very costly process, because we need so many information. We have to collect the information firstly, then we have to analyze the information, that we need the help of some experts. We have to organize some meetings with the board of directors. So it's a very costly process. All this requires lots of amount, lots of cost. So planning is a very costly process. Not only costly, but it is also very time consuming process, which is the next limitation of our topic. So sometimes we have to spend lots of time on a particular type of planning. So it requires it's a very costly process. Sometimes the experts were not available, sometimes the board of directors were not available. So it's very costly process, as well as a time consuming process. So the last point is it does not guarantee success. Planning does not mean that we have done the effective planning, we have done planning our function very effectively, so it means we are achieving success. No, it's not like that. Planning does not guarantee success. It doesn't mean that with effective implementation we can achieve whatever we desire. So it's not assurance. Planning does not provide any assurance to any of the organization, because it's just a preventive measure. We can just take planning as a preventive measure, so that we can reduce our expenses to the minimum cost. So this is all about the limitations of planning. So next, move towards the next topic, that is process of planning or planning process. Planning process comprises of 7 steps, and you have to maintain the serial order while writing these steps. You can also use the flowchart while explaining your points of planning process. So let's discuss the planning process. So the first step in planning process is setting up of objectives.
So every company who is going to plan their first step is to first of all set the organizational objective, what we have to achieve. The company's objective may be journal. The company's objective has to be set first. Every company which is going to plan, which is going to plan something, there must be some objective, and for achieving that objective there must be some small objectives to achieve that objective. For this we have to divide the objectives into two parts. First is the general objective and second is the specific objective. General objective is the objective which the company has to achieve, and specific objectives are those objectives which help to achieve the general objective of the company. For example, the company is supposed to increase the sales up to 10% or more than 10% this year, and for this company is company and to achieve that 10% objective, company is segregating this objective into various departments like sales department, marketing department, finance department. Each department has to work hard to achieve that 10% increase in profit for the company or the organization. So in this case the general objective is 10% increase in profit of the company, and to achieve that objective every department is contributing something, is providing something, or is setting its own objective, that is specific objective. Specific objective basically are the objectives which are set by the departments, by the single department to achieve the general objective for the company. Now the second step is developing premises. Developing premises means for every planning we have to assume something. Now what is assumption? What we have to assume? We all know that planning is futuristic. It has to depend on some forecasting. So since planning is forecasting, we have to take certain assumptions of what might happen in the future. हम ये मान के चलते हैं कि ऐसा ही होगा, इन फ्यूचर ऐसा ही होने वाला है. So we have to take some assumptions. All these assumptions which act as a starting point for preparing plans are known as premises. These are the starting point, or we can say that if we got 10% increase in profit, अगर हमारा 10% profit बढ़ जाता है, then what we will do? So these are certain assumptions, and these assumptions are known as premises in the planning process. So premises, what assumptions may be? Assumptions can be forecasting, existing plans, policies, practices followed in the past. All these are assumptions. We can take assumptions in the form of forecast. We can take assumptions in the form of we already have those plans. We can take assumptions in the form of policies. What are the policies? What are the existing plans of the company, what are the forecasts of the company, what practices company will follow, we followed in the past, वगैरह वगैरह. All these are the premises assumptions. And for successful and effective planning, it is must that all managers involved in planning understand and agreed with all the assumptions or premises. जितने भी मैनेजर्स जो काम कर रहे हैं कंपनी में, उन सबको पता होना चाहिए दैट दीज एजम्पशंस वी आर गोइंग टू टेक विद द प्लानिंग, कि हम ये एजम्पशंस मान के चलेंगे इन आवर प्लानिंग प्रोसेस. So third step is identifying alternative courses of action. We have set the objectives, we have taken some assumptions also. Now the third step for the company is to identify the various courses of action. As I said that suppose the company's target is to achieve 10% increase in profits, and to achieve this, suppose the company has three options. The first is company may increase the production process. कंपनी अपना प्रोडक्शन का काम बढ़ा देगी, ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी, ज़्यादा सामान बिकेगा तो प्रॉफिट अपने आप बढ़ जाएगा. दूसरी ऑप्शन कंपनी के पास है कि कंपनी अपने प्रोडक्ट्स का प्राइस कम कर देगी, प्रोडक्ट सस्ता हो जाएगा तो लोग जल्दी से खरीदेंगे, ऑटोमेटिकली कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो जाएगा. तीसरी ऑप्शन कंपनी के पास है कि कंपनी अपने मार्केट एरियाज़ को बढ़ाएगी. पहले कंपनी सिर्फ 2 मार्केट्स में सामान बेचती थी, अब कंपनी ने 4 मार्केट्स बना दी हैं, आपने मार्केट्स को एक्सप्लोर कर दिया है. पहले 2 थी, अब 4 हो गई हैं, तो ऑटोमेटिकली कंपनी का जो प्रॉफिट है वो जो ऑब्जेक्टिव है वो कंपनी अचीव कर लेगी. अब ये 3 ऑप्शंस हैं, इन तीनों ऑप्शंस में से कंपनी को कोई एक चुननी है, बट ये 3 ऑप्शंस ढूंढना ही थर्ड स्टेप है. द थर्ड स्टेप इज़ टू वी हैव टू आइडेंटिफाई द वेरियस ऑप्शंस टू अचीव आवर ऑब्जेक्टिव. मेरा ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए मेरे पास कौन कौन सी ऑप्शंस हैं, दिस इज़ द थर्ड स्टेप. वी हैव टू आइडेंटिफाई द वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शन इन द थर्ड स्टेप ओनली.
एंड इन दैट स्टेप वी हैव टू आइडेंटिफाई, हमें ढूंढना है कि हमारे पास अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए कौन कौन से रास्ते हैं। वी हैव टू सर्च द वेज, वी हैव टू सर्च आउट द पाथ्स, हमें अपने रास्ते ढूंढने हैं, पाथ ढूंढना है कि हमें किस रास्ते पे जाना है। बहुत सारे रास्ते हैं लेकिन हमें वो बहुत सारे रास्ते ही ढूंढने हैं। द थर्ड स्टेप इज़ टू आइडेंटिफाई द वेरियस वेज। Now the fourth step, in the fourth step we have to evaluate each of the alternative। हमारे पास जितने भी रास्ते हमें दिखे हैं अभी, जो हमें थर्ड स्टेप में नज़र आ रहे हैं, फोर्थ स्टेप में हम उन हर रास्तों को आइडेंटिफाई करते हैं, हर रास्ते को इवेल्युएट करते हैं, हर रास्ते को परखते हैं, उसके पॉजिटिव क्या है, उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं। सपोज वी हैव 3 ऑप्शंस टू इंक्रीज द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ 10%, and each option has to be tried by the company with the fourth step। फोर्थ स्टेप पे हम हर ऑप्शन को ट्राई करेंगे, हर ऑप्शन का पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है कंपनी के लिए, वो देखेंगे, नोट करेंगे। इन द फोर्थ स्टेप वी हैव टू इवेल्युएट ईच एंड एवरी एक्शन। Now the fifth step, the very important step is to we have to select the best option। हमने फोर्थ स्टेप में जितने भी इवैल्यूएशंस की, जितने भी रास्ते हमारे पास थे, हमने उनको सबको परखा, उनको टेस्ट किया। अब उनमें से सबसे बेस्ट जो होगा दैट विल बी चोजन बाय द कंपनी। नाउ इन द फिफ्थ स्टेप कंपनी विल सेलेक्ट द बेस्ट ऑल्टरनेट। जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा कंपनी उसको चूज़ करेगी इन द फिफ्थ स्टेप ओनली। नाउ इन द सिक्स्थ स्टेप company will implement the step decided by the option decided by the company उस स्टेप को, उस ऑप्शन को इम्प्लीमेंट कर देगी अपनी कंपनी में जो उन्होंने सिलेक्ट किया होगा। विच एवर इज़ द बेस्ट वन दैट विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय द कंपनी। अब इस पॉइंट में कंपनी के वो सारे फंक्शन, मैनेजमेंट के वो सारे फंक्शन आ जाएंगे आफ्टर प्लानिंग। जो प्लानिंग के बाद वाले हैं वो सारे फंक्शन, लाइक प्रोडक्शन मैनेजर अपना काम करेगा, से अपना सामान खरीदेगा, फिर ऑर्गेनाइजिंग में अपना काम होगा, उसके बाद स्टाफिंग अपना काम करेगा, डायरेक्टिंग अपना काम करेगा और लास्ट में कंट्रोलिंग अपना काम करेगा। सो इन द सिक्स्थ स्टेप ऑल द फाइनल डिसीजन विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय द company only। Now the last step is follow up action। It means that if company wants successful implementation of plans, अगर कंपनी चाहती है कि उसने जो भी प्लान किया है उसका वो सक्सेसफुल हो जाए, वो बिल्कुल सही हो जाए, वो बिल्कुल 100% उसका सही रिजल्ट आए, तो उसके लिए ज़रूरी है कंपनी फॉलो अप करे। फॉलो अप का मतलब होता है वो ज़रूरी है कंपनी ये देखे कि कितनी अच्छे से वो प्लान्स जो हैं, जो भी डिसाइड हुए थे, वो कंपनी में इम्प्लीमेंट किए गए हैं। मैनेजर्स ने कितने अच्छे से उनको इम्प्लीमेंट किया भी है कि नहीं किया है। इसके लिए कंपनी ने देखना है, मैनेजरियल फंक्शन कंपनी ने ये देखती है कि हम एक्चुअल में हमें क्या मिला है, हमने प्लान क्या किया था और एक्चुअल में क्या मिला है, इसका डिफरेंस कंपनी देखती है। सपोज वी हैव डिसाइडेड द 10% ऑफ इंक्रीज इन नेट प्रॉफिट एंड कंपनी अचीव ओनली 5%, इट मीन्स वी हैव नॉट इम्प्लीमेंटेड द प्लान्स इफेक्टिवली। हमारा कोई ना कोई लूप होल रह गया है। दैट 5% लूप होल जो है वो कहीं ना कहीं हमें अपने इसी प्लानिंग प्रोसेस में ही दिखेगा। एंड प्लानिंग विल प्रोवाइड अस सम रेमेडियल मेजर्स ऑल्सो, सो दैट इन फ्यूचर वी विल नॉट कमिट सच मिस्टेक्स। दोबारा से हमसे कोई गलती ना हो जाए, इसलिए हम फॉलो अप एक्शन को हम इस्तेमाल करते हैं। फॉलो अप एक्शन का मतलब होता है टू प्रोवाइड द फीडबैक टू द कंपनी दैट वी हैव सिलेक्टेड द थर्ड ऑप्शन एंड वी हैव इम्प्लीमेंटेड दैट ऑप्शन एंड नाउ व्हाट वर द रिजल्ट, उसका रिजल्ट क्या रहा है। इफ़ द रिजल्ट वॉज नॉट अप टू मार्क, व्हाट वर द करेक्टिव मेजर्स वी हैव टू टेकन, हमें कौन कौन से करेक्टिव मेजर्स लेने हैं सो दैट वी कैन अचीव आवर डिज़ायर्ड result on time। So this is all about the planning process। we cannot break the sequence of the steps in the planning process, so be careful while writing the planning process, while writing the steps of the planning। there are 7 steps and we have to follow all these 7 steps in the serial order, you cannot break the serial order। that's all for the day, thank you।